1 emanate, verb. खारिज करना, जाहिर होना. Of a feeling, quality, or sensation, issue or spread out from, a source. 2 cyclical, adjective. कई बार दोहराया जाता है और हमेशा एक ही तरतीब में होता है. बार बार होने वाला. चक्राते. दूरी. Occurring in cycles, recurrent. 3 afloat, adjective. भटकना. बेरा. बेकार. Floating in water, not sinking. 4 cumulative, adjective. मुसलसल बढ़ने वाला. अंबार का बाइस. मजमुई. Increasing or increased in quantity, degree, or force by successive additions. 5 defunct, adjective. मुतवफ़्फ़ी. मरहूम. मुर्दा. No longer existing or functioning. 6 bondage, noun. कैद. पाबंदी. असीरी. गुलामी. The state of being a slave. 7 outcry, noun. चीख. शोर. फरियाद. An exclamation or shout. 8 precedence, noun. तरजीह. सबकत. फौकियत. The condition of being considered more important than someone or something else, priority in importance, order, or rank. 9 expedient, adjective. मुफीद. मुनासिब. Of an action, convenient and practical although possibly improper or immoral. 10 leverage, noun. कुव्वत. असर. बीरमी निज़ाम. The exertion of force by means of a lever. 11 fiscal. माली. मुतालिका माल. Relating to money and especially to the money or government, business or organization earns, spends and owes. 12 stance, noun. मौक़िफ़. हालत. कैफियत. नुक्ता नज़र. The way in which someone stands, especially when deliberately adopted, as in cricket, golf, and other sports, a person's posture. 13 toil, verb. सख्त मेहनत करना. जान मारना. Work extremely hard or incessantly. 14 outskirts, noun. बैरूनी हुदूद. अतराफ. मुज़ाफ़ात. The outer parts of a town or city. 15 bolster, verb. लंबा गोल तकिया. गा तकिया. हौसला अफजाई. Support or strengthen. Pakistan and the World Cup. Uzair Sattar. Dawn Editorial, with Urdu translation. Published on December 15, 2022. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Pakistan's contributions to the Qatar World Cup reveal a juxtaposition. On the one hand, the country's institutions have failed to adequately develop its talent pool, footballing and otherwise. The Pakistan Football Federation remains the only Asian Football Confederation member yet to win a FIFA World Cup qualifier. On the other hand, the country's institutions have excelled at extracting economic and geostrategic rents, defined as effortlessly accrued income streams. Pakistan reportedly sent 150,000 migrant laborers to build Qatar's stadiums, and provided 4,500 soldiers to secure them. These contributions to Qatar 2022 emanate from poor domestic policies and structural economic fault lines, which carry harmful downstream implications for Pakistan's strategic autonomy and foreign policy. Pakistan's half-beating economic pulse continues to rely on the generosity of Gulf monarchs and their economies. Gulf monarchs provide cyclical bailouts, loans, and deferred energy payments to help plug Pakistan's structural current account deficit year to year. The Gulf economy provides Pakistan with millions of individual monthly remittances that keep many Pakistani households afloat day to day. Not too long ago,
figures showed Pakistan, nuclear-armed home to 220 people, to have earned more foreign exchange from its remittances than from the cumulative value of its exported goods and services. Pakistan's reliance on the Gulf inhibits its ability to protect its overseas citizens, reduces strategic autonomy in its foreign policy decision-making, and creates sentiments of faux pride and misplaced relevance, most visibly seen this year at the Qatar World Cup. The country's half-beating economic pulse relies on the generosity of Gulf monarchs and their economies. Despite being one of the largest suppliers of migrant laborers in Qatar, Pakistan did not join the chorus of international criticism over the commodification and exploitation of laborers in Qatar. Over 150,000 Pakistani migrant workers sent back approximately $1 billion in annual remittances in the 2021-22 financial year. Under the now-defunct Qatari kafala labor system, Pakistani migrant labor had been subjected to poor and unsafe working and living conditions, including irregular wage payments, debt bondage, passport confiscations, among other forms of exploitation through asymmetric employee-employer power relations. Pakistan's reliance on remittances and the resulting commodification of its overseas citizenry in the Gulf should have engendered an outcry at home. However, for Pakistani decision-makers, the migrant laborers' importance to Pakistan's rent-seeking economy takes precedence over their well-being and lived experience. Gulf monarchs can use, and have used, expedient leverage against Pakistan. The country's reliance on billions in annual Gulf remittances, over $17 billion last fiscal year, undermines Pakistan's strategic autonomy and foreign policy goals. In late 2019, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman is reported to have privately threatened former Prime Minister Imran Khan that Saudi Arabia and the United Arab Emirates would deport over 4M Pakistanis if Pakistan did not pull out of its commitment to participate in an OIC Alternative Summit in Kuala Lumpur. Pakistan pulled out of the summit despite Malaysia's principled stance following India's revocation of Kashmir's autonomy. More recently, in August 2022, there were reports that Qatar was likely to provide $2 billion in bilateral assistance amidst a balance of payments crisis. Pakistan then became the only country in the world to send soldiers to help provide security at the Qatar World Cup. Assistance is never free, especially from the Gulf. Pakistani policymakers have voiced feelings of pride in providing migrant labor and soldiers to Qatar. This is an attempt to seek faux relevance through issues that poorly reflect the state's priorities. The collective failure of the state to build domestic capacity, incentivize export production, and live within its means makes overseas Pakistanis the country's most significant export. Perhaps pride ought to be shelved for a time when Pakistan's government possesses the strategic autonomy to advocate for overseas citizens by decoupling them from its reliance on remittances, often earned in the Gulf through sweat, tears, and occasionally, blood. Or better yet, perhaps pride ought to be shelved for a time when Pakistanis don't feel it necessary to toil away as second-class citizens in the Gulf to make their families' ends meet at home. Pakistan's most promising contribution to the Qatar World Cup was not from its migrant workers or soldiers. It came from a sporting factory on the outskirts of Sialkot. Forward Sports retained their FIFA contract and exported millions of official FIFA Al Rila Matchday footballs used in Qatar and beyond. More than 43M footballs, valued at close to $200 million, were made in Sialkot in financial year 2021-22. Over many preceding decades, Sialkot's industrial hub has competed internationally by manufacturing and exporting high-quality products. For many World Cup iterations, Sialkot has beaten out significant competition from South and East Asia to retain its FIFA contracts. These export success stories may offer a little glimmer of hope. Incentivizing policies encouraging greater, more scalable exports can help dilute Pakistan's reliance on remittances. They represent the most promising avenues to bolster strategic autonomy and improve Pakistan's ability to pursue its foreign policy. The current government's economic policies of pegging the dollar have the opposite effect. In future iterations,
Pakistan's aspirational contributions to the World Cup should be to field a team that competes against other world teams, kicking footballs crafted in Sialkot, and supported by fans traveling to stadiums as supporters, not construction workers. However, like in Pakistan's political economy, structural reforms across the board, especially within the Pakistan Football Federation, are needed before that conversation can even kick off. Until our decision-makers continue to celebrate successful rent extractions through the Gulf and beyond, this aspiration will remain a figment of our imagination. It is in Pakistan's interest to shelve temporal feelings of pride through their contributions to Qatar 2022 until Pakistan's footballs and football players, not soldiers and laborers, have structures that enable their participation in World Cups. The writer is a South Asia research assistant at the Stimson Center, Washington, D.C. Published in Dawn, December 15, 2022. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. कतर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शराकत एक मुमासलत को जाहिर करती है। एक तरफ मुख्य इदारे अपने टैलेंट पूल को मुनासिब तरीके से तैयार करने में नाकाम रहे हैं, फुटबॉलिंग, और दूसरी सूरत में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीतने वाली एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की वाहिद रुकन है। दूसरी तरफ मुख्य इदारों ने माशी और जियो स्ट्रेटेजिक किरायों को निकालने में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिसकी वजाहत आसानी से जमा होने वाली आमदनी के सिलसिले के तौर पर की गई है। पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर कतर के स्टेडियम की तामीर के लिए 150,000 तारकीन वतन मजदूरों को भेजा और उनकी हिफाजत के लिए 400-500 फौजी फराहम किए। कतर 2022 अशारिया में ये शराकतें नाकिस घरेलू पॉलिसियों और साख्ती माशी फॉल्ट लाइन्स की वजह से पैदा होती हैं, जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी और खारजा पॉलिसी के लिए नुकसानदेह असरात मुरतब करती है। पाकिस्तान की आधी धड़कती हुई माशी नब्ज खलीजी बादशाहों और उनकी मईशतों की सखावत पर मुनहसर है। खलीजी ममालिक पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल करंट अकाउंट खसारे को साल ब साल पूरा करने में मदद के लिए गर्दिशी बेल आउट, कर्जे और मुअख्खर तवानाई की अदायगियां फराहम करते हैं। खलीजी मईशत पाकिस्तान को लाखों इनफरादी माहाना तरसीलात ज़र फराहम करती है, जो बहुत से पाकिस्तानी घरानों को रोज़ाना जिंदा रखती है। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, अदाद व शुमार से जाहिर होता है कि 220 मिलियन अफराद के लिए जोहरी हथियारों से लैस पाकिस्तान ने अपनी तरसीलात ज़र से ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया है। खलीज पर पाकिस्तान का इन्हिसार अपने बैरून मुल्क मुकीम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की उसकी सलाहियत को रोकता है, इसकी खारजा पॉलिसी के फैसले करने में स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी को कम करता है और गलत फ़ख्र और गलत मुताबकत के जज्बात पैदा करता है। सबसे ज़्यादा वाज़े तौर पर इस साल कतर वर्ल्ड कप में देखा गया। मुल्क की आधी धड़कती हुई माशी नब्ज़ का इन्हिसार खलीजी बादशाहों और उनकी मईशतों की सखावत पर है। कतर में तारकीन वतन मजदूरों के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक होने के बावजूद पाकिस्तान कतर में मजदूरों की इस्लाह और इस्तेहसाल पर बैन अल-अक़वामी तनक़ीद का निशाना नहीं बना। माली साल 2021-22 में 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी तारकीन वतन ने सालाना $1 अरब की तरसीलात ज़र भेजी हैं। अब गैर फ़ाल कतरी कफला लेबर सिस्टम के तहत पाकिस्तानी तारकीन वतन मजदूरों को गरीब और गैर महफूज काम करने और रहने के हालात का सामना करना पड़ा था, बशमूल बेकायदा उजरत की अदायगी, कर्ज की गुलामी, पासपोर्ट ज़ब्ती, गैर मामूली मुलाज़िमजर ताकत के ताल्लुकात के ज़रिए इस्तेहसाल की दीगर शक्लें। पाकिस्तान का तरसीलात ज़र पर इन्हिसार और उसके नतीजे में खलीज में अपने बैरून मुल्क मुकीम शहरियों की कमी के नतीजे में अंदरून मुल्क एक चीखो पुकार पैदा होनी चाहिए थी। ताहम पाकिस्तानी फैसला साजों के लिए पाकिस्तान की किराया की तलाश की मईशत में तारकीन वतन मजदूर की अहमियत उनकी फलाह बहबूद और ज़िंदगी के तजुर्बे पर तरजीह देती है। खलीजी बादशाह पाकिस्तान के खिलाफ फ़ायदा उठा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। खलीजी ममालिक की सालाना तरसीलात ज़र गुज़िश्ता माली साल में $17 अरब से ज़ायद पर पाकिस्तान का इन्हिसार पाकिस्तान की तज़वीराती खुद मुख्तारी और खारजा पॉलिसी के अहदाफ को कमज़ोर करता है।
2019 के अवाखिर में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने निजी तौर पर साबिक वजीर आज़म इमरान खान को धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान ने कुआलालंपुर में ओआईसी के मुतबादिल सरबराही इजलास में शिरकत के अपने वादे से दस्तबरदारी इख्तियार न की तो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात 40 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों को मुकबदर कर देंगे। भारत की जानिब से कश्मीर की खुद मुख्तारी खत्म करने के बाद मलाइशिया के उसूली मौक़िफ़ के बावजूद पाकिस्तान ने इजलास से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। हाल ही में अगस्त 2022 में ऐसी इत्तलात मौसूल हुई थी कि कतर अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान के दरमियान दो तरफ़ा इमदाद में $2 बिलियन फराहम करने का इम्कान है। इसके बाद पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया जिसने कतर वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी फराहम करने में मदद के लिए फ़ौजी भेजे। इमदाद कभी मुफ्त नहीं होती, खास तौर पर खलीज से। पाकिस्तानी पॉलिसी साजों ने कतर को तारकीन वतन मजदूरों और फौजियों की फराहमी पर फख्र का इजहार किया है। ये इन मसाइल के जरिए गलत मुताबकत हासिल करने की एक कोशिश है जो रियासत की तरजीहात की नाकिस अक्कासी करते हैं। मुल्की सलाहियत बढ़ाने, बरामदी पैदावार की हौसला अफजाई करने और अपने वसाइल के अंदर रहने में रियासत की इज्तिमाई नाकामी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क की सबसे अहम एक्सपोर्ट बनाती है। शायद इस फख्र को एक ऐसे वक्त के लिए ख़त्म कर देना चाहिए जब पाकिस्तान की हुकूमत को बैरून मुल्क मुकीम शहरियों की वकालत करने के लिए स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी हासिल है ताकि वो तरसीलात ज़र पर इन्हिसार से अलग हो जाएं। अक्सर पसीने, आंसुओं और कभी कभार खून के जरिए खलीज में कमाई जाती है। इससे भी बेहतर यह है कि शायद फख्र को एक ऐसे वक्त के लिए रोक दिया जाना चाहिए जब पाकिस्तानियों को खलीज में दूसरे दर्जे के शहरियों के तौर पर अपने खानदानों की ज़रूरियात को घर पर पूरा करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। कतर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा उम्मीद अफजा शराकत इसके तारकीन वतन कारकुनों और फौजियों की तरफ से नहीं थी। ये सियालकोट के मुज़ाफ़ात में खेलों की एक फैक्ट्री से आया था। फॉरवर्ड स्पोर्ट्स ने अपने फीफा मुआहदे को बरकरार रखा और कतर और इससे बाहर इस्तेमाल होने वाले लाखों ऑफिशियल फीफा अल रहला मैच डे फुटबॉल बरामद किए। माली साल 2021-22 में सियालकोट में 43 मिलियन से ज़ायद फुटबॉल बनाए गए जिनकी मालियत $200 मिलियन के करीब है। गुज़िश्ता कई दहाइयों के दौरान सियालकोट के सनती मरकज़ ने आला मेयार की मसनूआत की तैयारी और बरामद के जरिए बैन अल-अक़वामी सतह पर मुकाबला किया है। बहुत से वर्ल्ड कप तकरार के लिए सियालकोट ने अपने फीफा मुआहदों को बरकरार रखने के लिए जनूबी और मशरक़ी एशिया से अहम मुकाबला को शिकस्त दी है। ये बरामदी कामयाबी की कहानियां उम्मीद की थोड़ी सी किरण पेश कर सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्केल एबल बरामदात की हौसला अफजाई करने वाली पॉलिसियों को फ़रोग़ देने से तरसीलात ज़र पर पाकिस्तान के इन्हिसार को कम करने में मदद मिल सकती है। वो तज़वीराती खुद मुख्तारी को मजबूत बनाने और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को आगे बढ़ाने की सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उम्मीद अफजा मौक़े की नुमाइंदगी करते हैं। मौजूदा हुकूमत की डॉलर की कदर में कमी की माशी पॉलिसियों का उल्टा असर है। मुस्तक़बिल में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पुरजोश शराकत ये होनी चाहिए कि वो एक ऐसी टीम को मैदान में उतारे जो दीगर आलमी टीमों के खिलाफ मुकाबला करे, सियालकोट में तैयार करदा फुटबॉल को लात मारे और स्टेडियम ओहे में बतौर सपोर्टर सफ़र करने वाले शायकीन की हिमायत करे, न कि तामीराती कारकुनों की। ताहम पाकिस्तान की सियासी मईशत की तरह बोर्ड भर में सख्ती इस्लाहात की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अंदर इस बातचीत को शुरू करने से पहले। जब तक हमारे फैसला साज खलीज और इससे बाहर के जरिए कामयाब किराया निकालने का जश्न मनाते रहेंगे, ये ख्वाहिश हमारे तख़य्युल का एक मुजस्समा रहेगी। ये पाकिस्तान के मुफाद में है कि वो कतर 2022 में अपनी शराकत के जरिए फ़ख्र के आर्जी एहसासात को इस वक्त तक ख़त्म करे जब तक कि पाकिस्तान के फुटबॉल और फुटबॉल खिलाड़ियों, फौजियों और मजदूरों के बजाय ऐसे ढांचे न हों जो उनकी वर्ल्ड कप में शिरकत को मुमकिन बनाएं। मज़मून निगाह स्टीमसन सेंटर, वाशिंगटन DC में जनूबी एशिया के रिसर्च असिस्टेंट हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 15 दिसंबर 2022। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.